So hello everyone, I believe that the session has just started. So I am Shubdeep Datta, your chemistry educator, and today we are going to deal with a very important topic of stoichiometry, that is the limiting reagents, right? देखो, there is a way to learn chemistry. In chemistry actually, more important than what you are reading, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू आर रीडिंग इट, आप किस तरह से उस चीज को पढ़ रहे हो, है ना. सो मैं व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट ट्राई टू इनग्रेन एन आइडिया इन योर माइंड so that it seeds in, and every time you want to solve a problem of the limiting reagent you get that idea, and with the help of that idea you would be able to solve a lot of questions, है ना. So it is very important to relate everything with the real life, है ना. So we will not jump into the reactions outright. हम लोग एक बार में reactions के ऊपर जाके limiting reagents के ऊपर पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे. What I want to do is to give you an idea from the real life where the concept of limiting reagent has originated, है ना. For example, say if I want to make a cup of tea, if I want to make a cup of tea, what I need? I will need 1 cup water, है ना, and say 2 tablespoon tea leaves, है ना. I don't add sugar to my tea, so it's all right. If you are thinking sir sugar किधर गया, तो sugar गया, वो नहीं है इधर पे, ठीक है ना. So in order to make tea, my version of the formula is you add 2 tablespoon of tea leaves to 1 cup of water, right? So you will get 1 cup of tea. Yes, this is what we were trying to make. So this is my version of the formula of making a tea. Okay, इसमें अभी कोई बहस नहीं होने वाली. So what does it suggest? This is the formula. This is my formula. What does it suggest? It suggests that अगर आपके पास 1 कप वाटर है ना, और 2 टेबलस्पून टी है, तो आप उधर से 1 कप टी बना सकते हो. बट से कि मेरे पास क्वांटिटीज कितनी अवेलेबल है, मान लेते हैं ये मेरे पास 20 है, मान लेते हैं ये मेरे पास 20 टेबलस्पून है और ये मेरे पास 30 टेबलस्पून है ना. तो बताओ हम लोग कितने कप ऑफ टी बना सकते हैं. क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो हाउ मेनी कप ऑफ टी दैट वी वुड बी एबल टू मेक. This is the quantity that is given to us, and this is the formula of making a tea. Both are different, but since you have the ingredients you can make the tea. But my question is how many cups of tea you want to make here, how many cups of tea you would be able to make here. Any answers? What do you believe, है ना. Is it just an arithmetical question? You can try to solve it in your brain as well. No need to take pen and paper for it. So I believe if you have 30 cups of water and 20 tablespoon of tea, है ना, you would be able to make only 10 cups of tea. Only 10 cups of tea. Why? Now the real question is why, right? हम लोग क्यों केवल 10 बना पाएंगे यार, हमारे पास तो सामान है ना. अभी देखो यार, अभी आपको 20 टेबलस्पून टी कप अवेलेबल है ना, बट वाटर कितना अवेलेबल है 30. बट 10 के लिए 20 टेबलस्पून टी के लिए केवल मेरे को 10 कप्स ऑफ वाटर ही तो चाहिए, है ना. अभी 10 कप्स ऑफ वाटर में 20 टेबलस्पून टी खत्म हो जाएगा. उसके बाद मेरे पास वाटर तो बचेगा लेकिन टी लीव्स नहीं बचेंगी, है ना. तो मैक्सिमम में कितना 10 कप्स ऑफ टी बना सकता हूं, है ना. दिस इज द आइडिया गाइस, दिस इज द आइडिया, है ना. मतलब ये हुआ कि इधर पे फाइनली परफेक्ट क्वांटिटी अगर हम लिखें तो 20 टेबलस्पून पूरा का पूरा निकल जाएगा. ऑल द 20 टेबलस्पून ऑफ टी वुड बी एग्जॉस्टेड एंड ओनली 10 कप्स of water would be exhausted, right? So we will get 10 cups of tea. But what about the rest? What about the excess quantity? See,
there were 20 tablespoon of tea and the consumption is also 20 tablespoon of tea. So actually there is nothing left here. Tea leaves are all gone. There is nothing left here. So I have put a dash here. But if you want to calculate how much water is left behind, so we have used only 10 cups of water and available was 30 cups, right? So actually 20 cups of water are still left unused, है ना? And what we have is 10 cups of tea. Yes, 10 cups of tea with us. So this was actually the concept. The one that is left behind is the excess reagent or the excess substance, and the one which has finishes of first, जो चीज खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं, है ना, that is actually the limiting reagent. So this is the idea. जो भी चीज एक्सेस में प्रेजेंट है that is excess reagent, right? जो भी चीज लिमिटेड है ना, मतलब it will finish off leaving the excess behind is the limiting reagent. क्या आपको ये बात समझ में आ गई गाइस? है ना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, समझ में आ गया ना? So this was the case. This is the case of limiting reagent, the curious case of limiting reagent. But how do we calculate it? है ना, if you got everything, then what I'll suggest you is, let's make it more mathematical. Let's make it more mathematical and easier for us to understand everything, to calculate everything. What we shall do, suppose मैं मिटा दूं अभी, शायद आपको अगर ये समझ में आ गया हो, है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूं so that we get into the more mathematical complexity of it. Okay, so I am rubbing it off here. I will make it more mathematical for you so that it is very easier for you to comprehend the mathematics of it. So what we'll do is, suppose we are taking a number k here. अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, बस देखते जाना. Suppose we are taking a number k here. Okay, and what k is, suppose for water if I want to calculate the k, है ना, so what I'll do is I will put the available amount of water here, 30 cups of it, divided by the formula number of it. It will be called the stoichiometric coefficient of water. As in the reactions there are stoichiometric coefficients, na? So if this is the formula of making a tea, then the number of cups of tea is the coefficient of the water, right? So 30 divided by 1, this was the available water, and this is the stoichiometric coefficient of water. This one guy holds a ratio, right? So the k of water is 30. I will write it overhead here. Okay, the k value of water is 30. K is anything that will help us to calculate everything. So k for water is the quantity of water available whole divided by the stoichiometric coefficient of water, right? Similarly, I want to calculate k for tea leaves. K for tea leaves. So k for tea leaves is the amount of tea that is present, that is 20, whole divided by the stoichiometric, means the number that is present in the formula. It is 2, so it amounts to 10. It amounts to 10. So I will write 10 here. Okay, so the k value for water would be 30 and the k value for tea would be 10. Is that very clear, guys? Is that very clear? Where is my master? Now the magical part of it, है ना, इसमें जादुई पार्ट क्या है? देखो, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका एक चुटकी में क्या है, के वैल्यूज को निकाल लो. जिसकी वैल्यू कम होगी ना, जिसकी वैल्यू कम होगी वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा. ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है. सो सिंपल,
है ना, एक चुटकी में आप निकाल लोगे एवरीथिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है ना, फिर से मैं बताता हूं, के वैल्यूज निकालो जितने भी रिएक्टेंट्स है उनका। एक बार हमारे पास के वैल्यूज आ जाएगी, जिसका के वैल्यू सबसे लोएस्ट होगा ना वो लिमिटिंग है, मतलब वो सिस्टम से खत्म हो जाएगा, और जिसका के वैल्यू सबसे छोटा नहीं है वो सिस्टम में कुछ ना कुछ बचा रहेगा, इट विल बी लेफ्ट ओवर, है ना, इट विल बी प्रेजेंट इन एक्सेस, बट ऑलवेज द लिमिटिंग रिएजेंट वुड फिनिश ऑफ फर्स्ट एंड नो क्वेश्चंस अबाउट इट, राइट। के निकालो, सबसे छोटा जिसका के वही है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, सो हमने लिमिटिंग रिएजेंट एक बार निकाल लिया ना, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके बिहाफ पर, है ना, परफेक्ट रेशियो लिखते हैं। इसके बिहाफ पर हम परफेक्ट रेशियो या परफेक्ट क्वांटिटी लिखते हैं। ये मेरा स्टेप है, मैं पहले भी दिखाया, अब आपको लेकिन मैथमेटिकल तरीके से दिखा रहा हूं। सो व्हाट वी हैव इज अ लिमिटिंग रिएजेंट एंड 20 टेबलस्पून टी इज अवेलेबल ऑफ इट, है ना। सो द लिमिटिंग रिएजेंट विल फिनिश ऑफ, सो द परफेक्ट क्वांटिटी इज, if we want to take 20 tablespoon of tea, we would require only 10 cups of water, right? It is 2:1 ratio, so 20 is to 10 cups. So we will get 10 cups, we will get 10 cups of tea ready, we will get 10 cups of tea ready. What would be the last step? Last step is to analyze. Last step is to analyze what is left behind and what is made. Okay, so since this was the limiting reagent, all 20 of it would be finished off, but we could finish off only 10 cups of water, so another 20 cups of water would be left behind, and along with that we will have our product as tea, 10 cups of tea, right? 10 cups of tea. So simple. I will try to divert your attention to one more fact, है ना. Now for the perfect quantity, if I want to calculate the K, what would it be? For the perfect quantity, if I want to calculate the K, then see, अभी इसके लिए मेरे को K निकालना है, तो K वैल्यू क्या होती थी कि कितनी क्वांटिटी है, 10 कप्स है, डिवाइडेड बाय, ये परफेक्ट वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाटर का कितना है, 1। तो परफेक्ट क्वांटिटी के लिए K की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वाटर के लिए, है ना, 10 कप्स ऑफ वाटर के लिए। इसके लिए अगर मैं K निकालूं, इसके लिए मैं K निकालूं, ये KT लिख देते हैं, KW मतलब K ऑफ वाटर एंड KT मींस K ऑफ टी। इसके लिए अगर मैं K निकालता तो देखो परफेक्ट क्वांटिटी के लिए कितना आता, 20 लेते हैं हम लोग यहां पर, होल डिवाइडेड बाय इसका रेशियो कितना है, 2, दैट इज इक्वल टू 10। ओ माय गॉड, आपने क्या देखा कि परफेक्ट क्वांटिटी के लिए जब हम K निकाल रहे हैं ना, वो हर बार बराबर आ रही है ना। परफेक्ट क्वांटिटी के लिए K अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो वो हर बार बराबर आ रही है। ऑब्वियसली वेरी लॉजिकल भाई, इन दोनों में अगर बराबरी ना होती, है ना, मतलब एक छोटा होता और एक बड़ा होता, तो जो बड़ा वैल्यू होता K का वो करस्पॉन्ड करता एक्सेस रिएजेंट को, है ना, और जो छोटी वैल्यू होती वो करस्पॉन्ड करती किसको, लिमिटिंग रिएजेंट को। तो बेसिकली परफेक्ट क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जब दोनों के लिए K की वैल्यू बराबर हो जाए, जब दोनों के लिए K की वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है। जब ऐसा होगा तो ना ये बचेगा और ना ही ये बचेगा, है ना। लेकिन जब इस तरह का केस आएगा जहां पर एक में K की वैल्यू ज्यादा है, तो वो हमेशा लास्ट में बचा रह जाएगा, जैसे इस केस में 20 कप्स बचा रह गया, है ना। सो व्हाट माय आइडिया इज टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट माय आइडिया इज कि एवरी टाइम you solve these kind of questions of limiting reagent, what you want to find is the limiting reagent first. Once you are done with the limiting reagent, you can do the calculations right away. Okay, you can do the calculations right away.
keep in mind that the perfect quantity ratio for everything, for every reagent and every product would be the same. For example, अगर इसके लिए 10 cups of tea के लिए हम K की वैल्यू निकालें, है ना, 10 cups of tea के लिए हम लोग K की वैल्यू निकालें, तो there are 10 cups of tea and the stoichiometric coefficient is 1, so whole divided by 1, so this is also 10. So when everything is present in the perfect quantity, 10 cups, 20 tablespoon of tea and 10 cups of tea, the K value for the perfect quantity is same for everything, right? And when the K value is not same for everything, then we have is a limiting reagent and a excess reagent. So we will employ this fact to the questions right away, right? So I hope you are able to understand the concept of it. Okay, you are able to understand the concept of it. So I will quickly jump on to solving questions, right? Now we will integrate the complex chemical reactions and we will use this concept there of making a tea. And we will use this concept there of making a tea, right? So we'll not waste any further time. We'll start right away. What I'll do is, I will keep it here only. This is what I have learned in the first 10-20 minutes. I will keep that in the written format here only, so don't worry. Suppose we have a reaction. Now we will move on to the reaction part. We will move on to the application part. Suppose we have a reaction, say 7A plus 4B will give 10D. Okay, 7A plus 4B will give 10D. So if I will say that we have क्वांटिटी में लिख देता हूं इधर पे, we have 21 moles of A, सही, we have 21 moles of A and 15 moles of B, 15 moles of B, है ना. I'll have to predict, I'll have to suggest the answer that how many moles of D would be produced at the end if we take these many moles of A and these many moles of B. I have to suggest the answer. What is the maximum value of D that would be available to us at the end of the reaction? So guys, hurry up. Let's see. किसका आंसर है A, किसका आंसर है B? अभी लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है ना. तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम K की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मेकिंग D, लाइक इट इज द फॉर्मूला फॉर मेकिंग T, इट इज द फॉर्मूला फॉर मेकिंग दिस हैपन D. Okay, so to make 10 times of D means 10 moles of D, you will require 7 moles of A and 4 moles of B. So this is the formula of making D, right? Okay, understood? So what we want to do is we want to find कि इनमें से क्या कोई limiting reagent है या इनमें से क्या कोई excess reagent है ना. So what we'll do is we will find K value here. K value का मतलब क्या होता है कि अमाउंट कितना अवेलेबल है. जैसे A के लिए अगर मैं निकालूं तो अमाउंट अवेलेबल है 21 A का और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 7, so that is equal to 3, right? What I'll do is कि मैं K जो है वो B के लिए भी निकालूंगा. तो इस B के लिए K की वैल्यू कितनी है? The amount present for B is 15 moles, okay, and the stoichiometric coefficient that is available is divided by 4, right? Divided by 4. So here the value is 3 and here the value is more than 3. So how much it is actually?
it is almost 3.7 something, 3.75. It is almost 3.75. So out of these two values, which is the higher one? This is the higher one. So this B is actually excess in quantity. This B is actually excess in quantity. That's it. And obviously then this is the limiting quantity. This is the limiting quantity. And a limiting quantity will finish off first. So what I'll do is I'll write the perfect amounts. Perfect amounts. So if this is 21, if the consumption of A is 21 moles, what we'll have is B how much? Only 12 moles, yes? How did I calculated it? Because during the perfect amounts, the K value becomes equal, right? So if say we have X moles of B consumption, what 15 मोल्स पूरे तो नहीं खत्म हो रहे ना, मैं मानता हूं 15 में से x मोल जो है वो कंज्यूम हो जा रहे हैं, है ना। अब मुझे पता है कि एवरी टाइम व्हेन आई फाइंड द परफेक्ट क्वांटिटी ऑल द k वैल्यूज बिकम्स इक्वल, है ना। सो व्हाट आई विल डू इज, मुझे तो पता ही ना इधर पे k वैल्यू कितना है, 21 डिवाइडेड बाय 3। परफेक्ट क्वांटिटी के ऊपर अभी k वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो परफेक्ट क्वांटिटी के ऊपर k वैल्यू कितनी हो गई, 21 divided by 3. So this is 7 actually, right? अभी इसकी k वैल्यू कितनी होगी, परफेक्ट क्वांटिटी हमने लिए x, होल डिवाइडेड बाय 4, होल डिवाइडेड बाय 4. So I know that the value of k for this guy would be equal to value of k for this guy at perfect quantities, right? So 7 is equal to x by 4. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 7 is equal to x by 4. I'm sorry, I did a mistake here. Actually इधर पे k की वैल्यू कितनी है, 21 डिवाइडेड बाय 7. तो दिस वाज द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हियर, 21 डिवाइडेड बाय 7. सो आंसर हियर इज 3. Answer here is 3. So this 3 must be equal to this guy. Why? Because this is the k value at perfect quantity. So this 3 must be equal to x by 4. This 3 must be equal to x by 4. So by this relation x is equal to 4 into 3, that is equal to 12. So this is how we will calculate the value of x, that is the unknown quantity. Okay? So क्या मैं इसको मिटा दूं, आपको तो पता चल ही गया है. So this is 21 moles and this guy is 21. कितना निकाला था, 12 moles, है ना. So finally we will get ds. Finally we will get ds. फिर से वही करते हैं, मुझे नहीं पता d कितना बनेगा, मैं y मान लेता हूं. तो d का k निकालो. d का अगर हम लोग k निकालेंगे तो y डिवाइडेड बाय 10, y divided by 10. अभी this must be equal to k of any these two, चाहे आप इसको ले लो या इसको ले लो, बट ध्यान रखना परफेक्ट क्वांटिटी पर होना चाहिए. तो मैं चलो इसको ले लेता हूं, 12 को ले लेता हूं. So this guy is 12 divided by 4. Okay, so 1, this is 1 and this is 3. So y is equal to 30. So actually we will get 30 moles of d. We will get 30 moles of D. So this was the perfect scene. This was the perfect scene, right? So what would be the final analysis? What would be the final analysis? The final analysis would be, we had A as limiting reagent, so obviously none of it would be left, है ना? So 21 moles of A would be consumed in the process and nothing of A is left here. In the whole process we had 15 moles of B. We had 15 moles of B, right? Out of it 12 moles are consumed. So what we are left with is 3 moles of B. What we are left with 3 moles of B. Again D की बात करते हैं. D के कितने मोल्स बने? Finally D के मेरे पास 30 moles बन गए. So this is how we shall proceed with the questions of limiting reagent.
right? So it was not very hard, it was just about how we are going to read it, है ना. मैंने आपको पहले ही बताया कि केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ रहे हो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे पढ़ रहे हो, है ना. So this is all from my side, guys. So we will meet in the next class. So please be safe in these corona times. I hope you all are doing already good, keeping yourself safe, not going out too much, only for the important works that you have. Okay, thank you.